मीटिंग हॉल में हमारे बीच में एडीसी काउंसिल के इंतखाबात के बाद हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हमारे बीच में हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खुशामदीद। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से कि आप यहाँ पर चुनकर आए हैं और लोगों ने आप में पूरा विश्वास अपना जो है जताया है और हम लोगों को पूरा आगे भी विश्वास है कि आप जो है अपने जितने भी दायित्व हैं उनको बेखूबी जो है आप उनको अंजाम देंगे और आप ये जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर उसको आप बेखूबी निभाएंगे। हमारे बीच में एसपी पुलवामा, हमारे एडीसी साहब, हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा से हमारे डीवाईएसपी साहब एंड अदर ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए हैं आज इस ओथ सेरेमनी को, जो कि एक हिस्टोरिक इवेंट है, उसको विटनेस करने के लिए। मैं साथ ही में शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मीडिया पर्सन्स का जो आज के इस इवेंट को कवर करने के लिए हमारे बीच में हैं, और साथ ही में हमारे बीडीसी चेयरपर्सन, हमारे म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट और अदर इलेक्टेड हमारे जो मेंबर्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, जो कि ऑडियंस के तौर पर आज यहाँ पर आए हैं आपकी हौसला अफजाई करने के लिए भी और इस हिस्टोरिक सेरेमनी को विटनेस करने के लिए। जिला तरक्की कौंसिल पुलवामा की मेंबर मुख्तार भाई हूँ। खुदा के नाम हलफ लेती हूँ, इकरार सालियत करती हूँ, मैं सच के दिली और अपनी पूरी कॉन्शियसनेस से काबिलियत से इंसाफ अपने ओहदे के फराइज अंजाम दूंगी और पूरी तरह से तस्दीक करती हूँ मैं आइन हिंद के कायम करके कानून के मुताबिक सच्चे अक़ीदे वफादारी करूँगी और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और साइन को बरकरार रखूँगी। मंजूर अहमद गनाई, ज़िले तरक्याती काउंसिल पुलवामा का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सालिया करता हूँ कि मैं सिद्क दिल, वफादारी और अपनी पूरी काबिलियत और इंसाफ से अपने ओहदे के फ़राइज़ अंजाम दूंगा और पूरी तरह से तस्दीक करता हूँ कि मैं आइन हिंद के कायम करदा कानून के मुताबिक सच्चे अक़ीदे और वफादारी का मुज़ाहरा करूँगा और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। मैं इंग्लिश में लेंगे। I, Sayyid Abdul Bari Andrabi, having been elected as a member of District Development Council, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. शुक्रिया मंजूर साहब। मैं खुदा के नाम करती हूँ कि मैं सच्चा दिल, वफादारी और अपनी पूरी काबिलियत के अंजाम देती हूँ और पूरी तरह से तस्दीक करती हूँ कि मैं आइन के कायम करना के मुताबिक सच्ची दिली और वफादारी का इकट्ठा करती हूँ और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार
been elected as member of District Development Council, Pulwama, do swear in the name of God, and I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. I, Abdul Qayyum Mir, having been elected as a member of District Development Council, District Pulwama, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. I, Minhalati Bhatt, having been elected as a member of District Development Council, District Pulwama, do swear in the name of Almighty Allah, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty of India. میں مختار احمد بان ضلع ترقیاتی کونسل پلوامہ کا ممبر منتخب ہوا ہوں. خدا کے نام پہ حلف لیتا ہوں، اقرار صالحہ کرتا ہوں کہ میں صادق دلی، وفاداری اور پوری قابلیت اور انصاف سے اپنے عہدے کے فرائض انجام دوں گا، اور پوری طرح سے تصدیق کرتا ہوں کہ میں آئین ہند کے قائم کردہ قانون کے مطابق سچے عقیدے اور وفاداری کا مظاہرہ کروں گا اور ہندوستان کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا. Abdul Aziz Mir, having been elected as a member of District Development Council, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. میں بلاک پامپر میں تعظیم اختر بلاک پامپر ضلع ترقیل کونسل پلوامہ ممبر شپ متعلق ہوئی ہوں. خدا کے نام پر حلف لیتی ہوں، یہ اقرار صلح کرتی ہوں صدق دلی سے، وفاداری سے اور خدا کے پوری قابلیت سے میں اپنے انصاف سے اور عہدے کے انجام دوں گی، وفاداری سے اور پوری طرح سے تصدیق کرتی ہوں. میں آئین ہند کے قائم کرتی ہوں قانون کے مطابق سچے عقیدے سے اور وفاداری سے مظاہرہ کروں گی اور ہندوستان کی خود مختاری سے سلامت کو برقرار رکھوں گی. میں جاوید احمد بٹ ضلع ترقیاتی کونسل پلوامہ کا ممبر منتخب ہوا ہوں. خدا کے نام پر حلف لیتا ہوں، اقرار صالح کرتا ہوں کہ میں صدق دلی، وفاداری اور اپنی پوری قابلیت اور انصاف سے اپنے عہدے کے فرائض انجام دوں گا اور پوری طرح سے تصدیق کرتا ہوں کہ میں آئین ہند کے قائم کردہ قانون کے مطابق سچے عقیدے اور وفاداری کا مظاہرہ کروں گا اور ہندوستان کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا. میں محمد اختر ضلع ترقیاتی کونسل پلوامہ ممبر منتخب ہوئی ہے. خدا کے نام پر حلف لیتی ہوں، اقراری صالح کرتی ہوں، بے سچ دلی کی وفاداری، پوری قابلیت، انصاف سے
अपनी ओर से फराइज पूरी तरफ से तस्दीक करती हूँ। मैं आइन हिंद कायम करते हूँ। कानून के मुताबिक सच्चे अकीदे वफादारी मुजाहरे करेंगे। हिंदुस्तान खुद मुख्तारी सालमिया बरकरार रखेंगे। Dr. Harbaksh Singh Sasan, having been elected as member of District Development Council, District Pulwama, do swear in the name of God, Waheguru Ji, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty of India. Thank you.